Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel Online Classes for You. I would request you to watch this complete video and give your feedback. Today's topic is story writing, or how to write a story, and this lesson is for the students of middle and secondary level. So first of all, we should know that what is a story. When we go to the dictionary, we find the meaning, like the meaning of the story are an account of imaginary or real people and events told for entertainment. An account of imaginary or real people, यानी एक ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक या तो एक अफसानवी किरदारों से होगा, मीन्स वी डू नॉट नो इन रियल लाइफ दोज पीपल बट वी कैन जस्ट इमेजिन अबाउट देम, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे या तो वो रियल भी हो सकते हैं और समटाइम्स दोज इवेंट्स आर जस्ट इमेजिनरी, लाइक एन एडवेंचर स्टोरी, जैसे कोई मुहिम जोई के बारे में कोई स्टोरी हो, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में कोई स्टोरी हो, जंगल स्टोरीज हो, लाइक द स्टोरीज अबाउट द टार्ज़न वी हैव हर्ड इन आवर चाइल्डहुड. तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. Second definition of story is an account of past events in someone's life or in the development of something. कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड हों किसी की ज़िंदगी के, और अगर उसको पास्ट टेंस यूज़ करते हुए लिखा जाए तो वो एक स्टोरी बन जाती है. या हम बाज़ औक़ात किसी डेवलपमेंट के बारे में लिखते हैं, लाइक अगर आपको याद हो, आपने ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में एक स्टोरी पढ़ी होगी बुक्स में. वी कैन आल्सो राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मीनार पाकिस्तान. तो ऐसी कहानियाँ जिनका ताल्लुक रियल लाइफ से है. So we can extract a brief definition of the story from these dictionaries definitions. A story or narrative is a connected series of events told through words, written or spoken, imagery, still or moving, body language, performance, music, or any other form of communication. यानी स्टोरी क्या है? ये कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है. डिफरेंट इवेंट्स हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, और बाज़ औक़ात हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. समटाइम्स वी जस्ट राइट दोज वर्ड्स, समटाइम वी स्पीक दैम, समटाइम वी यूज़ इमेजेस, और समटाइम वी यूज़ वीडियोज़. बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस मीन्स रोल प्लेइंग, म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करके हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. So there are basically two types of stories. One is the fiction stories. Fiction stories are based on made up or imaginary events. Means ये made up हैं. We create these stories. They are not real. हम इन events को सिर्फ imagine कर सकते हैं, उनको create करते हैं, but they are not real events. So ऐसी stories को हम fiction stories कहते हैं. दूसरा है नॉन फिक्शन स्टोरीज. सो नॉन फिक्शन स्टोरीज कैन कवर एनी काइंड ऑफ रियल लाइफ इवेंट और एक्सपीरियंस. तो ये रियल लाइफ इवेंट्स हैं जो किसी भी शख्स, किसी पर्सनैलिटी की लाइफ में कुछ वाक़यात गुजर जाते हैं, तो उसको अगर ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी की फॉर्म में हम लिखते हैं, सो सच टाइप ऑफ स्टोरीज आर कॉल्ड नॉन फिक्शन स्टोरीज. Here we can see different fiction stories, examples of fiction stories like fairy tales, legends, dramas, adventure stories, science fiction, love stories, horror stories, ghost stories, and bedtime stories. These are different types of fiction stories. Non-fiction stories, we can see historical events, news and current events, biographies and autobiographies, memories and experiences, cultural history, crime and justice, science, love, family, travel stories, survivor stories, war stories, and there are so many other non-fiction stories. Now we come to the topic that how to write the story. An easy way to write a story is given here. There are 6 WH family questions. They say what, why, when, where, how, and who.
तो ये 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें एक स्टोरी की आउटलाइन क्रिएट करने में हेल्पफुल होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट. सो हेयर व्हाट मीन्स व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट. आप ये स्टोरी किस बारे में लिख रहे हैं. व्हाट इज़ द इवेंट और व्हाट आर द इवेंट्स इन दिस स्टोरी. सेकेंड, व्हेन these events happened, ये वाक़यात कब हुए. वी कैन राइट 1980s में हुए, ओल्ड टाइम्स में हुए, पास्ट में हुए, कब हुए. वी हैव टू मेंशन द टाइम पीरियड. वेयर these events happened, ये वाक़यात या ये वाक़या कहाँ पेश आया. वी हैव टू मेंशन द प्लेस ऑफ द इवेंट. नेक्स्ट इज़ वाई दिस इवेंट हैपेंड. तो हमने रीज़न्स बतानी है कि इस स्टोरी में अगर कोई वाक़या पेश आया तो वो क्यों आया है. तो उसके काजेज़ कौन से थे. व्हाट वर द काजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम. और नेक्स्ट के हाउ दिस स्टोरी बिगिंस, हाउ द प्रॉब्लम्स अकर्ड एंड हाउ इट कम्स टू एंड. तो ये जो हाउ है इसमें हमने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि स्टोरी का आगाज़ कैसे हुआ, इसमें प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ और फिर ये स्टोरी एंड कैसे हुई. तो जो लास्ट WH क्वेश्चन है हमारे पास, हु आर द पीपल, हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. तो आपने मेंशन करना है कि स्टोरी में आपके कैरेक्टर्स कौन से हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द WH क्वेश्चंस एंड मेक एन आउटलाइन. हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक स्टोरी की आउटलाइन बनाते हैं, फिर हम एक स्टोरी भी लिखते हैं इन्हीं WH क्वेश्चन को यूज़ करते हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ व्हाट. What mean what is the story about. So today we are going to write a story which is about a theme or moral. As you sow so shall you reap. और हम ये भी कह सकते हैं टिट फॉर टैट, जिसको हम कहते हैं अदले का बदला, या जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको उसका रिजल्ट या सिला मिलता है. सो दिस इज़ द थीम और द टॉपिक ऑफ आवर स्टोरी. और दिस इज स्टोरी इज़ अबाउट अ मॉरल. एज यू सो सो शैल यू रीप. Second WH question है when this story or when this event happened. So we can say that this story or this event happened long time ago in the past. Third WH question था कि where this happened. So we mentioned the place that a sugar cane farm on the other side of the river where this event happened. Now next WH question, why why the problem occurred in the story. So the reason was the jackal started howling and created the problem. Next WH question है कि how this story begin or how this story ends. So the jackal took his friend to a sugarcane farm. This was the beginning of the story. Then he started to howl, and at the end what happened we will write in the story. Now the last WH question was who are the characters of the story. So this story is about two friends. One is a camel and the second is a jackal. Now we write the story. We have made the outline. Now with the help of that outline we have created a story. The story is a camel and a jackal were friends. One day the jackal took his friend to a big sugarcane farm. It was on the opposite side of the river. After a sumptuous meal, the jackal began to howl loudly. There is a special or new vocabulary for the students. Sumptuous mean opulent, या हम कह सकते हैं very delicious meal. Began to howl loudly. The frightened camel pleaded with the jackal not to do so. The jackal said, "Friend, I have this habit after every meal. I cannot help it. I cannot help it." You can see here, this is an idiomatic sentence and it means it is out of my control. Whenever you say I cannot help it, it means it is out of my control. Soon the farmers arrived and gave a sound thrashing to the camel. Sound thrashing mean they beat them. They gave the camel a sound beating. बहुत सख्ती से, बहुत शिद्दत से मारा उसको.
When the camel crossed the river, the jackal joined him on his back. In the midstream, the camel took a deliberate dip in the water. When the jackal cried out in the terror, the camel said casually, I have the habit of rolling in the water after every meal. The poor jackal was drowned. And the moral is, as you sow, so shall you reap, or tit for tat. So we can say, what was the end of the story? The jackal drowned. So in this way we have completed the story, and now we go to the review of the today's lesson. Today we have learned that what is the dictionary meaning of the story? An account of imaginary or real people and events told for entertainment. यानी एक या तो हम रियल लाइफ के बारे में लिख रहे होते हैं या ऐसी लोगों के बारे में, पर्सनालिटीज़ के बारे में विच आर जस्ट इमेजनरी, लाइक वी ऑफन नाउअडेज watch the movies Spider-Man and the Superman. These are the imaginary characters or adventure stories. Second dictionary meaning of the story is an account of the past events in someone's life or in the development of something, like the story of modern farming. Next जो आज हमने पढ़ा, brief definition of the story which we extracted from the dictionary meaning. A story of or narrative is a connected series of events told through words, written or spoken, imagery, still or moving, body language, performance, music, or any other form of communication. और हमने ये भी पढ़ा कि there are different types of stories. One are fiction stories and the second one is non-fiction stories. So the fiction stories are based on made up or imaginary events, and non-fiction stories cover the any kind of real time event or experience. फिर हमने सीखा कि how to write a story. So an easy way of writing a story was that we have to answer WH questions: what, why, when, and what, when, where, why, how, and who. These are the 6 WH questions which help us to make an outline. Or at the end we also wrote a story with the help of the outline. So this was the our lesson 4 part 1, and the next lesson for part 2 will be about the story, and in that lesson we will discuss the elements of the story. That is also very important lesson, so don't miss that. At the end, I would like you to share this story, this lesson to the other students so they can use it and they can learn something about the story writing. And do not forget to subscribe this channel and hit the bell icon for the upcoming lesson. Your suggestions and queries are most welcome. So if you wanna send me some queries, you can send me an email at akiltefler@gmail.com, or you can give me your feedback through YouTube also. Thank you very much.